Okay, just like a dog leg stairs, so you can go with that. Then if you want to uh, add the number of flights including landing, so you can use the same thing. Okay, then this is the full step spiral. So as per this criteria, you can use this option. Okay, so already we have added here. So the same thing, you need to give the base level and top level, and you need to fix your maximum criteria. Okay, maximum riser height, if you don't want to exceed 190 so you need to give here. Tread depth, give here, and on the basis of that they can calculate the number of steps. Okay, then uh okay, so spiral is done. Okay, so this one is center and spiral is also we have saw here. Yes, so this one, where is that? Okay, so let's start from this. So our ground floor. Okay, so I need to go in ground floor. Okay, so if you go and just click here architectural and stair. Okay, and I will use this option center, end and spiral. Okay, so you can see the in video as per the criteria, but in that case you can't add the landing. Okay, so you need to give the first base and top level, base level and top level. On the basis of that they can add it this tier. If you want to add at with multiple levels, so you should go with that level to level. So if you want to add ground to first floor, then you need to add, then after that first to second, second to third. Okay, but you can give only two levels. Okay, base level and top level. Okay, so I have given here on the basis of that they have calculated 27 number of steps, so total is 5 meter difference. So but we don't exceed the 18 number of steps, so in that case you can add the mid slab and then you can split into the 2, 13 and 14 steps. Okay, so if you go here, so you need to just click here and you need to give the radius. Okay, suppose this radius is 1.5, so you need to give the radius like that and just close. Oops, go again, architectural, then stair, then use, you need to give a start point here, then you need to give the radius. So suppose 1.5. Okay, and start from this point to this point. Click here. Okay, then if you look at in 3D view, so it looks like that. Then after that you can add the landing also here. Okay, so if you want to edit, so just edit stair and you can click here landing and you can use this option, create a sketch, so you can add the landing here. Then if you want to move, so you can move anywhere. Once you final the location, so you can just give the move command or you can place anywhere like that. Okay, so this type is done. Then if you go again architectural stair, the another type is L shape window. Okay, so as per this requirement, if you want to add this type of stairs, so you can go with that. Okay, if I click here, okay, so they can calculate the number of steps, so on the basis of this criteria. Okay, and then you need to just place. Okay, so if you don't want to place in this direction, so you can just press the space bar, so you can rotate in 360-degree as per your requirement. If I want to place as per that, so just click. If you don't want to, so just press the space bar, you can rotate this in 360-degree. Okay, if you want to look at in 3D view, so it looks like that. Then the same thing, you can add the landing, or if you have already slab here, so you need to just place for access. Then after that you can just add the railing and all the stuffs. Okay, then if you go again architectural and stair, the last option is U shape window. Okay, so if you want to add this type of steps stair, so just click, so you can see.
But the same thing, if you want, you need to set your angle as per your requirement. If you don't want to set as per that, press the space bar. You can rotate this stair in 360 degree as per your requirement. If I click here, okay, so your stair is ready. So it start from 1 to 27. So if you look at in 3D view, so सर इसमें मेरे को वाइंडर्स खत्म करने हो जो टेढ़े स्टेप हैं तो कर पाऊंगा? क्या क्या इसमें जो दोनों बीच में जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हाँ वाइंडर्स आ रहे हैं, क्या ये आ जो रहे? घूमे घूमे हुए स्टेप हैं हाँ, वो मैं खत्म करना चाहूँ तो इसमें चेंज कर सकता हूँ क्या, मॉडिफाई कर सकता हूँ इसे? कौन से खत्म करने वाले आप, ये वाले जो स्टेप? टेढ़े वाले स्टेप है, हाँ। क्यों खत्म करने वाले हैं? एक बीच में लैंडिंग आ जाएगी छोटी सी 3x3 की। नहीं, तो ये केस में आपको ये लैंडिंग यूज, ये स्टेयर यूज करेंगे आप, अच्छा, ये वाला। डॉग लेग्ड वाली हाँ, पहला वाला ये ओपन वेल फिक्स है। करने के लिए। ये एल शेप फिक्स है। आप खाली इसमें ग्राउंड लेवल देंगे और फर्स्ट लेवल देंगे, तो उनके बेस पे आपको ये मिलेगा। ठीक है। ठीक ठीक तो इसमें एल शेप और यू शेप ये फिक्स है, इसमें आप नहीं कर सकते। लेकिन ठीक आपको करना है स्ट्रेट में, तो ये यूज करेंगे आप स्ट्रेट। ठीक। ओके। तो उसे 2 बार करेंगे यूज? किसे? अगर मान लो स्ट्रेट वाली को, अच्छा वो घुमा भी तो देते हैं हम उसे, उसको हाँ, फर्स्ट डॉग सेशन लेग्ड भी में तो थे बनवा क्या देते आप? स्टेयर हैं, के आपने फर्स्ट बताया सेशन। था डॉग लेग्ड। हाँ, इसमें हम घुमा सकते हैं ना। हाँ ये हाँ। देखो आपको। ओके, सो ये अगर मेरा यहाँ से, मुझे यहाँ से जहाँ ये स्टेप्स है और यहाँ पे, सो ये मैं स्ट्रेट स्टेयर केस यूज करूंगा। अगर हम्म, मुझे डॉग लेग करना है, यहाँ से लैंडिंग आ जाएगा, फिर यहाँ से हम्म, मुझे वापस यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ हम्म, पे। राइट। सो अगर हम्म, यहाँ से फिर ये लैंडिंग, सो ये केस में मैं स्ट्रेट स्टेयर केस यूज करूंगा। ठीक है। हम्म, हम्म, ओके। Okay, so these are different types of stair here. So you can use this option if you want to edit. Okay, so just click, and, and this tab is automatically active here. So you need to click edit stair, and you can add the landing here. The railing is also automatically come. Okay, so if you see here, so if you delete this railing, right, so you can add architectural railing, and we have two options. Sketch path, for example, if I want to add some railing, yeah, here in previous session we saw, so I will use this option sketch path. So I will add the path here. On the basis of that, this railing has been generated. But if you have already placed on stair or ramp, okay, so right now we are looking only stairs, so just concentrate on stair. So if you have already model stair, okay, so you can use this option and just simply select your stair. So this railing is appear here. If you want to convert, but in that case you need to add in your file other railing also. So if I convert into this mono well steel railing, so you can see it's converted. Okay, but in that case you should copy, or you should that family of railing you want. Okay, so you can just convert, simply just select, and these number of different types of railing comes here, and you need to just click as per your requirement. Okay, so railing is simple. They have two option here in railing: sketch path and sketch by place on stair ramp. So you can draw here. Then next option is ramp. Okay, so let's see ramp. So okay, so what I do, I will just show you here. So we have two level here, right? So my first level is ground level, and first floor is uh, 5 meters. So the gap is 5 meter. Okay, and if I want to add the ramp from this point to this point, okay, so I will show you. So if you go to the floor plan, okay, and if you click here architectural and click here ramp, right, so this is the ramp. The same criteria, base level you need to give base level and top level. Okay, so you can see here these option you need to fix first. If you click here edit type, so I will explain later. Okay, and we have option here, okay, line or curve, it's depend on our
ram's shape. So if I want to add some curves, so you can use this, and if you want to straight, so you can use this line. Okay, so first I will use this line, right? So I will click here, right? So you can see here width 1 meter, the ramp width is 1 meter. Okay, and if you go here and just see here maximum incline length, I have set here 10 meter. Okay, it means, okay, I will show you in new session. Okay, so this is my ground level, and this is my, sorry, ground level and first level. So I want to add the ramp. Okay, so I have given the ramp length is 10 meter. Okay, so this length is 10 meter. Okay, and then this ramp go again, then go again, then go again, and reach at this level. Okay, so this is maximum incline length. Okay, here 10. Okay, so I will explain this maximum uh, ram slope. Okay, so I will explain this. So if I add here 12, okay, so and click here apply, I will justify this. What is the 12 here, and click here OK, right? Then if I start, so my base level is ground level. Okay, so I will start from this point. Okay, so you can see here, so zero of incline ramp created, right? And 6 meter is remaining, sorry, 60 is the ramp part. Okay, so you can see if I start from this point to this point is 10 meter because I have set here, and this is the 16,000 remaining part of ramp. It means the ground floor to first floor. Okay, so this is my ramp lane 10 meter. Okay, and after that I will continue again here. This is again 10 meter, so remaining is 40,000. Okay, so I will again continue from this. Again I will continue from this point to this point, right? So you can see remaining again 20,000 remaining ram created. Okay, so I will just add again, then add again, and you can see 10,000 remaining. So okay, so you can see here 60,000 incline ramp created but zero remaining. It means my ramp is finished. If I click here, okay, and if you look at in 3D view, okay, so what I do, I will just move this ramp just, yeah, here. Okay, and I want to go in 3D view. So I need to on the ramp. So you need to go in visibility graphics, VV, model category, and ramp. So you need to on this ramp and click here OK, right? So you can see, and if I convert this railing to this railing and this railing, okay, so you can see this ramp has been added here. If I look at in elevation, okay, so this ramp east elevation, it looks like, yeah, you can see here north elevation. Our ramp start from this point, then this point, this point, this point, this point, and last year. Okay, so you can add this. Okay, so if you want to give the 10 meters or 12 meters, so you need to give here as per your requirement. So if I yeah, select this, and you can see here maximum incline lane 10 meter, and this is the slope. Okay, so x is 12 means 1 by, so you need to give this value. So I will show you. So if I add 1, okay, so what happens, and I will click here apply and okay. Oops, sorry, I will just draw again. Go to ground floor level, right? So this ram I have set here 12, 1 by x equal to 12. But if you go again architectural, click here ram, and in that case I want to set here 1, right? And 10 meter is okay, and click here okay. And if I start this ramp,
So you can see, if I start and just finish, it means 5000 incline ramp created, zero remaining. Okay, so if I click here, okay, and if you look at in 3D view, so your ramp is looks like. Okay, if I cut the section through this ramp, okay, and go to your view, so this angle is 45 degree. If I measure angular, so you can see, if I if you go again edit, so if I set 1, so it's 45 degree. Okay, but as per the standard, you need to give 8 to 12 value. Okay, so you can add here 8 to 12 as per the code. Okay, so if I add here 8, so let's see how it looks. So as per your requirement, you need to fix this. Okay, so if you go again architectural and RAM, okay, and this time I will set here 8, right, and click here apply. Okay, the RAM is not enough to reach the top constraint. Change the slope or increase the length of RAM. Okay, so in 10 meter is not fit here. Okay, so in that case, I will increase the incline length. Let's see. So I have make it 12 meter and 8 and click here OK. Then you can start. So 0 incline and 40,000 remaining. So 12 meter is done. Then 12 meter is done. Remaining is 16,000. Then done. So 4,000. Then finish. Okay, so you can see 0 remaining and click here. Okay, if you look at in 3D view, your ramp is looks like. I will just change the railing. Okay, like that. And if I cut the section, I will cut section here and go to your view. So you can see, can just give the DI command and angular. So you can see this is the 7.13 degree. So if you add S, so your angle is 7.13 degree, right? So as per the code, our RAM slope should be 8 to 12. Okay, so you can just give as per your requirement. Got it? So if you go again, RAM, so main constraint is in RAM. If you go again in RAM, so you need to fix this, your maximum incline length. Okay, so 12 meter or 8 meter as per your requirement, you need to give here. Then after that, RAM maximum slope. So just consider, if I add x equal to 1, so I get 45 degree. Okay, so just just keep in mind. So if I add the 1, so your ramp angle is 45. So 45 angle is very steep. Okay, so you need to give between the 8 to 12, right? So this value just follow, just you need to give 8 to 12 segments as per your requirement. Then you can get the ramp slope. So you should consider the slope also. Okay, so if you add 1, so you can get 45 degree, but normally you can give 8, 9, 10, 11, 12. Okay, and you can maximum 12 meter is sufficient, maximum incline length. You don't exceed this. Okay, so those two criteria, on the basis of that, you can add here. Okay, then I will add again one example. So if I go to the ground level and if I add a floor here, right, so this is my floor. Okay, and finish. So this is at the ground floor, right? You can see, if I select, so this is the ground floor. Okay, and then I want to add one more. So I want to add one more slab here, right, and click here OK. But this slab is both the slab is same level. So just consider, this slab is above or
3 meter or 2.5 meter. So what I do, I will give the height here. Okay, so if I cut the section, so it looks like so. If I go to view, so you can see. Okay, so this slab is at ground floor and this is also ground floor, but I have given here 2.5 meter height. So if I measure this, it's 2.5, right? And suppose I want to add the ramp here in this zone. Okay, so just consider this is the mall, and just you need to give the ramp from this point to this point. Okay, so if you go here ground floor, okay, and I want to show the above slab also, right? So you need to go here, go down and click here view range, right? So this is I am at the ground level, okay, but I want to show above slab. Okay, so go to here view range. So just you can see I am in ground level. Okay, so you have option here view range. Okay, so you can see here cut plane. Okay, so this is your ground level, right? And this is your bottom level, and this is your top level. I will explain in paint. So if I click here new, right, so this is my ground level, right? And I have add the slab here and here also, right? And if I add some below part also, but right now I can't see this slab. Okay, but you can manage this. How to manage? So this is your cut plane, right? So if you look at in this view range table, so this is your cut plane, right? So offset, so I have given here offset above 100 mm. So this is my cut plane, right? So above 100 mm, this is my cut plane. So actual level of this plan, right? And this is associate level at the ground. Okay, so this level I have set here, but you need to give the distance here. So then you can see above slab. Okay, so you need to, if you go here, so this distance is 2.5. Okay, and right now I have given only 100 mm. That's the reason that slab not covered in this range. So you need to extend this range. How to extend? You need to go again and click here uh, view range edit. Okay, and okay, so this is 100. Okay, and I want to just add the here 3 meters. Okay, and if I click here apply and okay, oops, sorry. If you go again, I will just find and hidden. Okay, so view range, associate level, ground level, so 3 meter, and I will just increase this 500. Apply and okay. So what is the reason? Okay, I will increase again. So go again in view range and 3500. Okay, so I will check again what is the, yeah, it's a 2.5. Okay, so if I set again in view range, so if you set here unlimited, means oops, what happened? Not able to see this top slab. Okay, 300. I am at the ground level here. Okay, we'll check again here. So ground level here and 2.5, and below the same thing below level you can give here. So suppose I will give below 100 and minus. Yeah, in that case you need to give the minus because we are showing the below part. Okay, suppose I will add here minus 3 meter. So any element below the 3 meter, suppose this is 3 meters, so you can see here in hidden line. Apply and okay. Okay, so I will check again.
Not able to see. If you go to view, so this is the ground level. If I select this ground level, okay, and this is also ground level. The height is 2.5. Okay, so if I go to the ground level, okay, I will check which slab we need to show here. Okay, so we are not see able to see this slab. Okay, so go again ground floor, go to the edit view range. If I select unlimited, that apply and okay, so not visible actually. I have set more than 2.5, so not able to see here. Okay, I will check again. If I select unlimited, no. Okay, I will explain again. If I cut again to view, so it's 2.5 height only. So our cut plane is ground floor, at the ground floor. So this is ground floor level. Okay, so I will check again in elevation. Let's see. Okay, yeah, where is our slab? If you check in north elevation, yes. So you can see if I extend this level, okay, so this level as the ground level. So if I move here, right. So you can see this is at the ground level, and our cut plane we have given here, right? So if I measure this distance is 2.5. If I given 3 meters, so this slab is also near, we need to show in our ground floor plan. Where is the okay, okay, सर फेस करके बताइए ना थोड़ा, बाकी ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं. हाँ एक मिनट. तो इसको है हमारा कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पे ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल में. अगर यहाँ पे गया मैं view range. Okay, so what I do, I will just increase this 1 meter and let's see. कुछ तो इश्यू है इसमें. ओके, सो ये मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ. ठीक है, कुछ तो क्योंकि कैसा है व्यू रेंज में मैंने तो यहाँ पे एक्सीड कर दिया है. अप टू फर्स्ट फ्लोर पर लिया फिर भी नहीं दिख रहा है. अप्लाई, ओके, व्यू रेंज. ओके, तो इसमें अगर ग्राउंड फ्लोर लिया and I have added here 3 meter and cut plane is ground level. Okay, below is minus, apply. Okay, okay, if I go to the first floor level, slab, yes, so we can't see here also. So if you go again view range, so you can see minus 18 we have set here first level. Okay, if I given here 3 meter, minus 3 meter, and click here apply and okay. So yes, so you can see here, but these small slab, yeah, you can see the small slab here. Okay, but if you want to show the big slab, so you need to increase again. So go to again and you need to increase this distance. So suppose minus 5 meter I have given. Click here apply and okay. The same issue. So why not? Okay, I will just see the details and I will explain the purpose for this adding two slope, sorry, two slab here. Okay, and I want to add the ramp here from this point to this point. Okay, so if you go to here ground floor, okay, and my slab size is
19 meter, and above slab is 6, almost 6 meter. Okay, and then remaining part I want to add a ramp. Okay, so if you go again and क्यों नहीं दिख रहा है ये, 1 minute. We'll check again. See below 1 meter. Okay, I will add here 100 mm. If I given unlimited, so it means no any restriction, so not shown this slab. Yes, if I cut the section again, okay, let's see, I will explain. Okay, so we need to start. So our first slab is 6170. So what I do, I will just draw a line 6170 for the reference. 6170 from this point. Okay, like that. Yeah, so this is our upper slab and this is lower slab. So I want to add the ramp here. So this part is almost 12 meters. So I want to add the 8-meter ramp here, right? So you need to go here, architectural tab, and click here ramp, right? And you need to give here your criteria. So ground floor is base level and top is also ground level, but I want to add here 2.500. Sorry, top level. Yes, so 2.500 above. Okay, so here is 0 and top level is 2.500, right? Then after that you need to set your incline length. Suppose I want to set here 8 meters, it's sufficient. Okay, and 8 is okay, and click here apply and okay. And I want to start from here to here. Okay, and click here. You can see the width you can top offset here, and width is 1 meter, right? So you can change width 1.5 or any 2 meter. Okay, so if I click here okay, and you can see the ramp is up. So after once you, so you can just move this ramp and just paste here. Okay, if you look at in 3D view, so this ramp is looks like. So if I cut the section, so top level is ground level and top level is 2.5, base level. So what happened? सर So, सर रैम्प का जो एंगल होता है सर 27 से 40 डिग्री तक होता है एज पर आईएस कोड 27 to 40 डिग्री बराबर. सो उसमें 8 से 12 डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको वो एंगल. ये 8 और 12 क्या है, वो 1/x दिया हुआ, तो x क्या है? x यानी कि 1. अगर आप 1 डालेंगे तो आपको 45 डिग्री मिलेगा. इट मींस सर 10 1 इक्वल टू 45 डिग्री. यस. नो, अगर 1/x है, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको 45 डिग्री मिलेगा. बराबर. सो आपको 8 से 12 में डालना है तो उसमें आपको वो एंगल मिलेगा. तो उससे बेटर हो कि हम लोग एंगल फाइंड कर लें. हाँ, सो एंगल, लेकिन आपके पास एंगल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखोगे सो एंगल ये इसमें 1/x दिया है. सर So- मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन, मैं एग्री करता हूँ, हम्म, लेकिन अगर हम लोग एंगल फाइंड करके इसमें अगर वो डालें, जैसे यहाँ पर जो सर 1 दिया है तो tan 1 इक्वल टू 45 डिग्री होता है. 10 नहीं, 1/x. अगर x इक्वल टू 1 डालेंगे आप तो 1 होगा. बराबर. यहाँ पे 1 Okay. आएगा तो 45 डिग्री मिलेगा आपको. ओके बराबर. ओके. अगर मैं ये देखो यहाँ पे अभी 8 डाला है तो वो रैम्प पहुंच नहीं रहा है वहां तक. बराबर. 8 डिग्री यानी कि कितना होता हमारा एंगुलर, तो 7 डिग्री होता है. ओके, सो ये केस में हमें रैम्प का एंगल बढ़ाना है. स्लोप को ऐसे ही बोलते हैं 1 in 8 1 in 10, जैसे
कोई स्लोप वैसे देते हैं ड्रेन वगैरह के लिए तो 1/50 1/100। यस, बराबर। लेकिन ये रैम के केस में क्या है, यहाँ पे उन्होंने ये डिजिट दिया है। और वर्टिकल भी तो डिस्टेंस कवर करना है ना जी, इसलिए 1/8 या 1/10 देते हैं, बराबर 12 ज्यादा से ज्यादा। बराबर। अगर मैं देखो, मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ। सो 12 के लिए 8 मीटर बहुत छोटा होता है, सो 12 मीटर ऐड करता हूँ मैं, अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट किया तो ये रैंप आ गया, ठीक है। सो इसको मैं अलाइन करता हूँ यहाँ से। अगर मैं सेक्शन, इफ यू लुक एट इन सेक्शन, सो ये ऐसा। लेकिन वो सर उस फ्लोर पर तो जाके टच नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये हो रहा है। तो दोबारा घुमाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मुझे अगर एक ही इसमें करना है तो वो केस में क्या करेंगे, वो दिखाता हूँ। अगर 2.5, अगर यहाँ पे मैंने सो ग्राउंड लेवल, और ओ गलत हो गया ना, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर नहीं आना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए। मेरा ऑफसेट क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मेरा बेस कंस्टेंट है, यस सर। राइट। और टॉप लेवल में मैंने ग्राउंड लेवल ही दिया है, लेकिन ये हाइट दिया है, अभी देखो आएगा वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर गए आर्किटेक्चरल रैम, सो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर देना है, ठीक है। सो ये रैम्प मेरा स्टार्ट होगा एट द बेस लेवल ग्राउंड फ्लोर, right, and top level is also ground floor, but I have given the top offset 2.5 meter, right. So in that case I have set here 12 meter and 12 here, and click here apply, and just start the ramp from this point to this point and just finish. And if I align this like that, so let's see. So अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। सो सर वो टॉप ऑफसेट 0 रख के टॉप लेवल अगर फर्स्ट फ्लोर किया तो? नहीं, फर्स्ट फ्लोर ये नहीं है ना, ये मेरा सर 1/12 का मतलब है 12 मीटर हॉरिजॉन्टल में 1 मीटर हाइट पकड़ेगा, 2.5 मीटर हाइट नहीं पकड़ेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। एक मिनट। ओके, क्या करते हैं इसको, अगर इसको हम ग्राउंड फ्लोर कंसिडर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। सॉरी, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अभी यहाँ से एक रैम डालते हैं, क्या होता है। सो यहाँ से अभी आर्किटेक्चरल रैम्प, सो ग्राउंड से फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। ये मैं 0 रुकता हूँ इसमें, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने 12 मीटर दिया है और स्लोप भी 12 मीटर दिया, और यहाँ से मैं एक ये बहुत सो यहाँ से यहाँ तक इसको अलाइन करता हूँ और इसको मूव करता हूँ यहाँ से। अभी इफ यू लुक एट इन सेक्शन, कुछ तो गलत हो रहा है। सर वो 1/12 का मतलब भी वो सही बोल रहे थे कि 12 मीटर में 1 मीटर राइज होगा सर। 12 मीटर में नहीं। यस सर, स्लोप में 1:12 का मतलब वही होता है सर। सर गाड़ी है ना 1/8 से ज्यादा तो चढ़ ही नहीं पाती, कार चलानी है ना, बराबर, वो एक डिस्टेंस में ही राइज कर पाती है। 1/8 है ना, बिल्कुल स्टीप स्लोप है, 1/12 कंफर्टेबल स्लोप है गाड़ी चढ़ाने के लिए, रैंप बनाने के लिए। बराबर बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 1 डालोगे यहाँ पे तो उसको 45 डिग्री मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर 1 डालोगे आप, ठीक है। और इसको अप्लाई करेंगे और ओके। सो मुझे अगर यहाँ से फर्स्ट ग्राउंड से, अभी ये इसमें ही फिनिश हो रहा है, छोटा है रैम, ओके। सो अगर 3D में गए तो ये देखो, लेकिन हो क्या रहा है कि मेरा जो रैंप है वो पहुंच नहीं रहा है वहां तक। ये क्या क्राइटेरिया है, अगर देखो यहाँ पे मैंने इसको क्राइटेरिया भी दिया है, बेस लेवल और फर्स्ट फ्लोर लेवल। सो ये यहाँ तक आ ही नहीं रहा है, ये भी नहीं आ रहा है यहाँ तक। सो ये इसका देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है इसका। सर हेलो। भरत जी सही बोल रहे हैं सर। हम्म। क्योंकि मैं अभी गूगल किया हाँ, तो वो लिख रहा है द प्रिफर्ड स्लोप फॉर अ बिल्डिंग एक्सेस रैंप इज 1:12 और 1 इंच ऑफ राइजर पर 12 इंच ऑफ हॉरिजॉन्टल रन।
that बराबर roughly that roughly 8% slope also retain as 4.8 degree angle slope. बराबर है, लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे अगर आप रेविट में जाते हैं ना, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? वो ठीक है, आईएस कोड के हिसाब से बराबर बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे अगर रैम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखो ना, आपने 1 डालोगे तो आपको 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रैम मैक्सिमम स्लोप 1 बाय एक्स, सो 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1, सो 1 डालेंगे आप तो आपको 45 डिग्री मिलेगा। सो आपको 1, 8 और 12 के हिसाब से ही डालना है। तो अगर आपने 8 डाला तो कितना 17 डिग्री मिल रहा है आपको, बराबर। अभी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गो टू, यहाँ पे देखो 7.13। सो ये केस में हमने कितना डाला था? नहीं, ये गलत है। ये कुछ रैम का कुछ आज ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, क्या है कमांड? एक्चुअली कैसा है, हम रैम ज्यादा यूज नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रैम थोड़ा देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये रैम थोड़ा पेंडिंग रखते हैं इसमें कुछ, क्योंकि क्या है, ये फाइल का इशू है कि क्या, कुछ पता नहीं है। देखो यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे आप, और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिया है, ओके, एडिट रेंज। सो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं को आपको ऊपर से कितना पार्ट कवर करना है और नीचे से कितना पार्ट कवर करना है, लेकिन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा रेविट का सॉफ्टवेयर का इशू है, या थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, सो रैम थोड़ा होल्ड रखिए, मैं देखता हूँ उसको डिटेल में और आपको बताता हूँ। Okay, sir. Yes. So next in architectural tab, roof we saw, then stair railing, then structural. If you go here, so this okay. So what we'll do? So today we'll start steel structure. Okay. So just consider we are taking the one example. So our structure is looks like, so just consider this is a raft slab. Okay, and then you can add some column here, concrete column. Okay, and above that you need to provide some steel column. Okay, I section from that. Sir, Okay, हाँ, सर वो आपने वो मैट फाउंडेशन को आपने बताया नहीं, फाउंडेशन का भी तो क्या बताया नहीं? वो आप तो स्ट्रक्चर बताने, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया तो उसमें किस तरह काम करेंगे? पाइल फाउंडेशन? हाँ, जैसे सर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उस पर एक प्रोजेक्ट दे देते, फिर ये स्टील बताते तो ज्यादा बेटर होता। मैं नहीं समझा आपको क्या चाहिए। जैसे सर एक बिल्डिंग, एक एग्जांपल के तौर पर एक बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बता देते हैं तब। बिल्डिंग का कौन सा, कंक्रीट का? हाँ, कंक्रीट का ही। वो आपको करना है ना भैया, आप करो ना प्रैक्टिस। अभी देखो मैंने बिल्डिंग में बता दिया बीम कैसा डालने का है, कॉलम कैसा डालने का है, सर आपको भी ये ठीक है, मैं समझ गया वो। लेकिन सर इन केस पाइल फाउंडेशन का डालना हो तो? पाइल फाउंडेशन तो आप कॉलम यूज करो ना, कॉलम यहाँ पे सर्कुलर कॉलम कंक्रीट का रहता है। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जाइए लोड फैमिली, और यहाँ पे जाइए। अच्छा, वो सारा लोड फैमिली दिया रहेगा। हाँ, यहाँ से लेना है ना आपको। अब अगर आपको कॉलम चाहिए, अगर मैं यहाँ पे गया, कॉलम आपके लिए स्पेशल है, स्ट्रक्चरल कॉलम फोल्डर। यहाँ पे कंक्रीट में जाएंगे आप, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। ये देखो ये राउंड कॉलम आ गया आपका कंक्रीट का। इसमें वो पाइल का नहीं दिया है सर। ये पाइल यूज करो ना, कॉलम यानी पाइल, सर्कुलर पाइल चाहिए आपको, बराबर। जैसे कंबाइंड फुटिंग है सर, एक मोर देन 2 कॉलम रहे तो, मोर देन 1 कॉलम रहे तो उसको एक जगह कंबाइन करना, फिर पाइल कैप डालना होगा। हाँ, तो कॉलम अगर ये देखो, पहले तो ये पाइल, ये सर्कुलर कॉलम हो गया, तो आप इसको एज अ पाइल भी यूज कर सकते हैं, बराबर। कंबाइन कंबाइन फुटिंग करने का है तो एक स्लैब डालेंगे, कौन सा, फाउंडेशन स्लैब। ठीक है, ओके। जो भी आपका साइज होगा उससे डाल देंगे यहाँ पे। ये मेरा साइज है, ठीक है। और ओके, सो इसमें मुझे कॉलम डालना है, मैं यहाँ पे कॉलम डालूंगा 2-3 कॉलम, जो भी हिसाब से है। अगर मेरा फुटिंग राफ्ट फाउंडेशन अलग साइज का है, सो क्या करेंगे, सो यही यूज करूंगा मैं। और सपोज ये मेरा राफ्ट है, डिफरेंट शेप, एल शेप का है, लाइक दैट। सो ये मेरा हो गया राफ्ट। इसमें मुझे कॉलम डालने हैं, सो कॉलम में डालूंगा यहाँ पे जितने भी मैंने कैलकुलेट किए हैं उतने।
रही बात पाइल कैप की, आपको ये कॉलम डालेंगे आप, ये कॉलम आप, ये देखो ये कॉलम हो गया आपका और पाइल हो गया। इसके बाद आप स्लैब यूज करेंगे, ये हो गया आपका पाइल कैप। यहाँ पे अगर शेप में ट्रेपेजोइडल शेप में तो आप स्लैब में जाके ऐसा शेप बना सकते हैं, पाइल कैप का कौन सा भी शेप बना सकते हैं, वहां पे बहुत ऑप्शन है। तो ये चीज सर एक बार बता देते कैसे होता है, यही चीज मैं पूछ रहा हूँ। क्या मुझे बताते हैं आपको, प्रॉब्लम किस में है, क्या नहीं आ रहा है आपको? मैं कर रहा था, जैसे मैं पाइल मोर देन 2 कैप डाल रहा था, कैप नहीं, फाउंडेशन कर हाँ रहा था हाँ हाँ। कॉलम, तो वो मुझसे नहीं ले रहा था, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। सो ये देखो ना, कॉलम आपको पाइल डालना है तो पाइल आप कॉलम यूज करेंगे, स्ट्रक्चरल में जाके कॉलम यूज करेंगे, वो पाइल हो गया। ठीक है, आपको पाइल पाइल कैप डालना है तो पाइल कैप फाउंडेशन तो पाइल। इशू नहीं, वो तो आ जाएगा सर, वो कॉलम में इशू हो रहा था, 2-3 आसपास 2 फीट के डिस्टेंस पर, 1.5 फीट के डिस्टेंस पर डलाता है, तो वो नहीं हो रहा था मुझसे। 1.5 फीट पे डला है जैसे मतलब। मैंने कॉलम डाल लिया, ठीक है, हम्म। उससे सेंटर से मैं 2 फीट का डिस्टेंस लेके उसको ऑफसेट दे रहा था, वो हाँ, नहीं हो रहा, वो नहीं हो क्यों रहा नहीं था। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं सर, मैं फिर छोड़ दिया उसके बाद, फिर मैं सोचा आपसे पूछ लूंगा। ओके, सो ये आपने रैप डाल दिया बराबर, फिर यहाँ पे आपने एक कॉलम डाल दिया बराबर, ये कॉलम हो गया आपका हाँ सेंटर, हाँ सर्कुलर कॉलम हो गया। हाँ हाँ अगर आपको वापस कॉलम डालना है यहाँ हाँ से 1.5 फीट से, हाँ, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे सर कॉलम से। हाँ तो रेफरेंस लाइन खींचिए ना, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन डाल दीजिए ऐसा। ठीक है, फिर और एक रेफरेंस लाइन डाल दीजिए, फिर ये कॉलम कॉपी कर लीजिए, हो गया। नहीं तो अलग साइज का है तो आपको नया डुप्लीकेट साइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, देखता हूँ फिर ट्राई करके। नहीं प्रॉब्लम यानी कि कॉलम क्रिएट नहीं हो रहा है क्या? नहीं, कॉलम क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो ऑफसेट नहीं ले रहा था, मैं रेफरेंस लाइन नहीं डाल रहा था। कॉपी कर लो ना, आपने कॉलम कॉपी भी किया फिर भी कॉपी हो जाएगा। एक्चुअली मैं सब कर रहा था, लेकिन रेफरेंस लाइन नहीं डाल रहा था, फिर अब रेफरेंस लाइन डालकर देखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। आप कौन सा भी एलिमेंट लो विदाउट रेफरेंस लाइन, वो कॉपी मूव सब होता है वो। ओके, करता हूँ, फिर दोबारा फिर पूछता हूँ आपसे। सर हाँ सर यस जैसे हमें तो मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलेगी, मतलब पहले से ही मॉडल तो बना बनाया होगा ना, हमें उसमें कॉलम और बीम और स्लैब अपने हिसाब से फिर एडजस्ट यस करने पड़ेंगे, ऐसे यस। होगा ना सर एक्चुअल में? ये देखो अभी क्या होता है, हम जब काम चालू करते हैं, सपोज ये मेरा स्ट्रक्चरल का फाइल है, ठीक है, 3D मॉडल। सो इसमें हम शुरू में क्या करते हैं, आर्किटेक्चर का मॉडल इसको इसमें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम अपने हिसाब से डिजाइन से, अगर आर्किटेक्चर ने डाला है 400 बाय 400 कॉलम, लेकिन बैठ नहीं रहा हो आपके डिजाइन के हिसाब से, आपने उसको 600 बाय 600 किया है, तो आप मॉडल करेंगे 600 पे 600 और कॉर्नर मैच करेंगे आर्किटेक्चर का। फिर ये सारे चेंजेस आप आर्किटेक्चर को पास करेंगे कि एज पर आवर स्ट्रक्चरल डिजाइन हमारे कॉलम साइज ये है। फिर वो आर्किटेक्चर में शुरू में क्या होता है, आर्किटेक्चर का मॉडल पहले बनता है, क्योंकि उनको एस्पेक्ट वो क्या बोलते हैं इलेवेशंस वगैरह उस हिसाब से वो फाइनल करते हैं। एक बार हो गया कि स्ट्रक्चरल को देते हैं कि देखो भाई इसमें ये बैठ रहा है क्या। फिर उस केस में क्या होता है कि बहुत टाइम हमारा साइजेस वगैरह अफेक्ट होता है एज पर कंडीशन। ठीक है, सो एक बार हमारा मॉडल हो गया है कि हम उनको बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, आप भी उसमें चेंजेस कर लो, फिर वो लोग भी चेंजेस करते हैं उसमें। क्या नहीं सर, बना बनाया मिलेगा ना पहले तो हमें, मतलब आर्किटेक्चरल मॉडल, उसमें फिर हमें ऐड करना होगा ना ये सारी चीजें? हाँ हाँ, बराबर बराबर, अगर नई बना बनाया मिला है तो आपको आपको ही स्टार्ट करना है। तो इसमें एनालिसिस भी होता है क्या? एनालिसिस में ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन वही मैं वो पूछ रहा वो था। डिजाइन में कितना आपको बेनिफिट मिलता है, वो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, शो द एनालिटिकल मॉडल, ये अगर ऑन किया तो ये आपको एनालिटिकल मॉडल हर कॉलम के और स्लैब, ये देखो स्लैब में दिख रहा है कि आपको कलर अलग सा। यस सर। सो ये है इसमें, लेकिन ये कैसा यूज करते ये नहीं पता मुझे, डिजाइन पर्पस। ये देखो यहाँ पे ये कॉलम है मेरा, सो एनालिटिकल मॉडल, यहाँ पे कुछ इसका ये बहुत से ऊपर
हाँ ये देखो, ये लेवल देखो, 1 एनालिटिकल। हाँ ये देखो एनालिटिकल मॉडल। लेकिन अभी ये डिजाइन के लिए कैसे यूज करता हूँ वो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं डिजाइन का मुझे ज्यादा ये नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये एनालिटिकल फ्लोर है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं वो उसको स्टैड में एक्सपोर्ट करते हाँ, हैं, वो तो फिर पता है। हाँ स्टैड में एक्सपोर्ट करते वो एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं, ऐसा कुछ है शायद उसमें। ये देखो तो यहाँ इसमें पे, सिंपल मॉडल ही सब से जनरेट करना है सर, कुछ नहीं क्रिएट करना है। हाँ ये देखो अभी एनालिटिकल मॉडल आपका 3D मॉडल है, ये आपका कॉलम है, एनालिटिकल कॉलम। लेकिन ये कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो स्टैड में, कौन से डिजाइन सॉफ्टवेयर में, मुझे वो नहीं पता है। वो सर वो अलग उसको स्टैट प्रो या ई टाइम एनालिसिस करके हम्म। उसको हम लोग ट्रांसफर करते ई टाइम में सिर्फ मॉडल बनाने के लिए, बोले ई टाइम कर इसमें रेविट ओके में। बराबर। सो ये केस में आपको खाली बाउंड्री चाहिए रही थी ना, यस बाउंड्री सर। और ये कितना वॉल्यूम वगैरह है, सो इस हिसाब से दिया यहाँ ये पे मिल जाता आपको, एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है। ये क्वांटिटी भी मिल जाती है सर, कितना हुआ क्वांटिटी है, वॉल्यूम, ये सारा हाँ बराबर, यहाँ पे मिल जाएगा एरिया, इसके उस हिसाब से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं फिर। सर हाँ सर ये बीआईएम जो होता है ना, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, वो सर रेविट का ही पार्ट है ना सर वो? रेविट का ही पार्ट है वो, रेविट का ही पार्ट है, उसमें रेविट है। और उसमें क्या होता है कि आप ओवरऑल साइट लेआउट कैसा क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें बताते हैं उसमें बीम में पूरा। तो सर क्या वो सर वो वो हमारे इंक्लूड है या नहीं है सर, मतलब? नहीं, इसमें खाली आपको बेसिक रेविट सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा एडवांस है, उसमें शेयर कोऑर्डिनेट्स वगैरह। अभी ये देखो, ये मेरा अगर साइट है तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला। तो ये ओवरऑल साइट है अपना यहाँ पे, और ये मेरे स्ट्रक्चर यहाँ पे। सपोज ये मेरा स्ट्रक्चर 1 है, फिर ये स्ट्रक्चर 2 है, बिल्डिंग 2 है, फिर ये एल शेप है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, और ये ओवरऑल साइट लेआउट रहता है। फिर आप जब ड्राइंग बनाएंगे, अभी ये मेरा सेपरेट ड्राइंग है इसका है, बिल्डिंग 1 का, सो मैं बिल्डिंग 1 का ऐसा ही बनाऊंगा। फिर यहाँ जाके ये इसमें एक्सरेप करूंगा मैं, फिर एक्वायर करूंगा कोऑर्डिनेट्स। सो इसमें जो भी चेंजेस करूंगा वो ओवरऑल साइट लेआउट में दिखेंगे यहाँ। अगर यहाँ पे रोड, सिविल का कुछ रोड जा रहा है तो वो क्लैशिंग कोऑर्डिनेशन के लिए ये सब चीजें रखती है, मायने रखती है यहाँ पे। यस। सो बीम में बहुत है। ये रेविट यानी कि बीम में रेविट सॉफ्टवेयर है वो, और हम बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक में हम खुद को, हमें मॉडल बनाना आना चाहिए, ड्राइंग क्रिएशन करना चाहिए। सो ये सारी चीजें इसमें हमने बेसिक कोर्स में ऐड की है। ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया है बीम का पूरा। यस। आप किसी एक ही चीज में करियर बना सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर मैनेजमेंट तो बीम में सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप दोनों में बना सकते तो आपको कंपनी घर पे लेने को आएगी, ऑलराउंडर हो जाएंगे आप। अगर आप डिजाइनिंग प्लस ड्राइंग क्रिएशन भी करेंगे तो वन मैन शो हो जाएंगे आप तो। ये आपका प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि एक ही में करियर बनाएंगे। सो आप, अगर हमारे केस में क्या था कि शुरू में हमको डिजाइन का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम इधर ही डाइवर्ट हो गए। लेकिन आपको एक्सपीरियंस है डिजाइन का, आप कर रहे कैलकुलेशंस वगैरह, यस सर। सो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको, अगर आपको रिविट आएगा तो। तो सर मॉडल क्रिएट करना तो जान ही गया है, अब ज्यादा बीम के मतलब बीम सीखना जरूरी है, ज्यादा अंदर जाना। हाँ वो तो है। धीरे धीरे अभी आप क्या करो, आप खाली रेविट पे कंसंट्रेशन करो। फिर कैसा है, धीरे धीरे ये जो स्टेप्स है, अगर आपको रेविट आ गया, सो उसके बाद एडवांस है थोड़ा, वो बीम में कैसा कोऑर्डिनेशन करते हैं, ओवरऑल साइट लेआउट में कैसे एक्वायर करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। यहाँ पे अगर साइट्स, ये देखो साइट, ओवरऑल साइट, अगर यहाँ पे आप गए मैनेज में तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक्वायर कोऑर्डिनेट्स, पब्लिश कोऑर्डिनेट्स, स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स। सो ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है, ठीक है। ओके सर। यस। ओके, सो रैंप में देखता हूँ, और रैंप का नेक्स्ट सेशन में रैंप अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेवल भी नहीं ले रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, फाइल को अगर प्रॉब्लम है तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और नया फाइल क्रिएट करता हूँ, और हमारा स्टील वर्क चालू करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा बिल्डिंग है,
एक छोटा सा बिल्डिंग लेंगे हम स्टील वर्क के लिए। सो ये राफ्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे कॉलम है, मैंने यहाँ तक कॉलम दिया है, कंक्रीट कॉलम, और उस पे ऊपर में ना स्टील फ्रेमिंग है, ये स्टील कॉलम आ गया, राइट, ये भी स्टील कॉलम आ गया। उसके बाद हमें राफ्टर डालना है यहाँ पे। So if I want to add the rafter from this point to this point, then after that I want to add some Z purlins, side purlins. So let's see one by one. Okay, so first of all we need to create a new drawing. So I will go with that new structural default metric, open. Okay, right, and I will save this file, save, and go to our folder location, Revit training 10.3.10. Okay, and test 3. Okay, and save this file. Okay, so first of all, number of columns and number of rows and columns you need to find out, or you need to fix this. Okay, so just consider, I will add here structural grid. So go to the structural tab and grid. Okay, and I want to add here, so this is first grid, then second grid, then third, and then fourth. Okay, and here it's just consider I want to add 4 columns, 4 bay here. Okay, like that. Then after that you need to decide, or you need to set the distance between the grid. Okay, so this distance, just consider 3 meter. So 3 meters, yes. So, and this distance is 3 to 4, just consider is 6 meter. It's depend as per your inputs. Okay, so instead of, so just consider, I want to say it's a 9 meter. Yes, so first of all you need to fix your plan. Okay, so this is I section. Okay, so this is second row and this is third and fourth, right, and you need to add the column here. So this is the plan, right, like that. And then after that you need to provide some wind column here also as per design, like that. So you need to set this distance, center to center distance. Okay, so suppose I have calculate total distance, just consider this is 3 meter, this is 3 meter, and this is also 3 meter. Okay, and this is 6 meter, and this is also 6 meter. So let's start. So we need to add this. So this is also 3 meter, and last one is also 3 meter, like that. Okay, so I want to add the dimension here. So my first column is here main column. Okay, and the remaining is stub column, sorry, wind column. Then if you give the dimension, so this is 6 meter, so instead of 6 I will go with that 4 meter, right, and here also 4 meter, and here also 4 meter. Okay, so I will just give here A, B, C, D, B, C, and D. Okay, so just like that. Okay, so you need to place exact at the center here. Okay, then after that you need to create the levels here. Okay, so if I cut the section right here like that, so this is my raft slab, and I want to add some column here, concrete column, and then steel column, and then after that
here is the rafter. Okay, so you need to give the level. So first level is your top of slab, then top of column, right? Then here you can give here top of steel column, right? And roof. So you need to add this level, whatever you have design. Okay, the distance. So let's start. So I want to give the name here, top of slab, right? And just consider this is at the 0 level, and I want to add the top of column here, top of column. Okay, and just consider 3-meter height column. I will go with that. And if I stretch this, then after that I want to create again new grid. Okay, and I want levels, and I want this time I will give here top of steel column. Okay, so my steel column height is just consider this is 3.2, 3.5 height, so 3500, right? And after that you need to give the your roof. Okay, so roof is just consider 1 meter above from this column. Okay, so if I add, so this is 1 meter apex. Okay, so you can give as per your requirement. Okay, so if I click here create similar, and I want to give here 1 meter, so you can say roof. Okay, so yes, so if I click here and 1 meter like that, so if you, or you can give the slope also. So 3 to 5 degree generally we are giving the slope for the industrial shade. Okay, so these are the levels here. Okay, then you can see you need to go here top of slab. So whatever wrapped slab you need to add here. Okay, so right now I will just add here wrapped slab. So you need to go here structural and click here foundation slab. Okay, and click here foundation slabs, and suppose my slab thickness is 300 mm. Okay, and I want to add the slab here. So slab is done. Then you need to set here fine and hidden lines. So if you look at in 3D view this, and just set there fine and realistic. Okay, so if you go again top of slab here, so I think what is the issue? If I go again and floor slab, I will check here. Apply and okay. Is the reason slab not visible. Top of slab here. So if you check in elevation, so yes, so this is the slab. Okay, and go to floor plan, right? And you have option here edit tab. So 1 meter, 1 meter all is cut plane is top of slab. Why not see in? I think some issue here. I want to reinstall Revit. Okay, so the next is top of column. So you can see here the top of column, and here is the top of steel column. Okay, so this, if you see here, so distance from this top of slab to top of column is 3 meter. Okay, so you need to add the column here. So you need to go here top of slab. I not see here. All good here. On top of slab I have given 1 meter here. So I will just set 100 mm. Not able to see. आई थिंक सर Okay. वर्क नहीं कर रहा वो दिख ही नहीं रहा है वो. नेक्स्ट सेशन में करते हैं सर, रीइंस्टॉल कर लीजिएगा. वैसा ही करेंगे, नहीं तो क्या है सब. ठीक है, चलेगा, देखता हूँ मैं.
इसको प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन है यहाँ पे स्लैब लेकिन दिख नहीं रहा है वो। स्टार्टिंग में सर ऊपर वाले में भी 100 था शायद, एक बार क्या? ट्राई करके देखो। वो जो ऊपर सर वाले टॉप में ऑफ स्लैब में जो था ना ऑफसेट, उसमें शायद 1000 की जगह 100 था पहले। नहीं ना, टॉप ऑफ स्लैब में 0 दिया है। नहीं सर, वो जो अभी आप कट प्लेन वाला वो जो खोला था ना, उसमें स्टार्टिंग में व्यू 1000 व्यू या 100 था व्यू शायद सर, रेंज एक में बार सर। वो व्यू रेंज नहीं ना, 1 मीटर है ना यहाँ पे। पहले 100 था सर शायद, एक बार स्टार्टिंग में जो आपने किया था। नहीं नहीं, 100 दो या पर दिखना तो चाहिए ना वो ऐसा। ये कैसा है, अगर आप व्यू रेंज में गए यहाँ पे, सो ये मेरा कट प्लेन है बराबर। सो कैसा या न्यू, यस, ओके। सो ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, और ये मेरा कट प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। ये कट प्लेन यहाँ से मैं इसको सेट करता हूँ। अगर ऊपर का कितना पार्ट मुझे दिखाना है तो वो रेंज मैं दूंगा ताकि वो पार्ट दिखेगा। द सेम थिंग बिलो। सो ये अगर मैं माइनस में दूंगा तो जो भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन ये केस में मैंने दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो दिखने का कोई सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ एग्जैक्ट एट ग्राउंड फ्लोर तो फिर भी नहीं दिख रहा है वो। विजिबिलिटी में चेक किया तो फ्लोर फ्लोर सब सब ऑन है मॉडल कैटेगरी में। कुछ तो लफड़ा है क्या, देखते हैं रूफ स्लैब। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, थैंक sir. यू।